Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to solve some questions of CSR Net जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे एंड पार्टिकुलरली दिस क्वेश्चन इस पे जब से एग्ज़ाम हुआ है CSR Net का लास्ट दिसंबर का उस समय से आई गॉट मैसेज आई मीन लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम कि सर वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इवन दो इट्स लुक वेरी ट्रिवियल बट वी स्टक एट सम पॉइंट। तो मैं सोचा कि अब कर दूँ बट आई वॉज बिजी विथ so many things. I had some other commitments, so I was busy with that, but now I thought कि let's do this because अब एग्ज़ाम भी आपके आने वाले हैं, आगे होंगे ही. So let's understand कि what is this question and it uses very basic concepts. So without wasting fraction of second, let's understand कि how one should approach this kind of problem and what are those basic concepts involved in this question. ठीक है भाई, चलो. So this question asked in your December 2019 and question here is very simple. You have a natural number n which is greater than equal to 5, okay, and then they are saying which of the following are true. The number 1, the sum 1 by n from 1 to capital N is less than equal to 1 plus log n. Then the same sum strictly less than 1 plus log n. Third one, 1 by n from 1 to capital N less than equal to log n, and n from 1 to n1 by n greater than equal to log n. So look at the option. It's seamless. All options are look same. I mean options are like little bit changed and trivial. So it needs some estimate. They're asking about the estimate of 1 by n, है ना? Series nth partial sum of 1 by n. The estimate. What you can say about this? The behavior of this nth partial sum. And this frequently, why they have asking this type of things are very useful in number theory. There's plenty of uses there. The estimate of this, the rate of order of convergence. So that's why the motivation behind asking this question was that. So okay, so let's see how one should approach this kind of problem. Okay, so see how should I do this. So let me do this. So solution, I always start how to approach. So how to think. ठीक है, हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. तो देखो एक एक करके. सो हाउ वन शुड डू दिस. सो पहले तो एक चीज़ क्लियर करो कि ये n जो है सीरीज़ 1 बाई n. सो पहले एक चीज़ रिकॉल करो कि ये बेसिक इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ दैट, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला. रिकॉल दिस फैक्ट कि 1 to x 1 by t dt is equal to log x, right? So this is the definition of logarithm. So what is the definition? I mean sometimes people know very good concept but sometimes they don't know basic things कि what is the logarithm, log of positive number, what is the definition? That's integral. ठीक है, so this is the logarithm. Okay, so that's what I am going to use here to solve this. Okay, so just go through one by one. What is this first sum? So for the first sum is your this series 1 by n from 1 to capital N, right? So this, so they are asking what you can say about this relation. What is this sum? Is it less than equal to this or greater than equal to this? So they are asking this relation कि ये दोनों में बड़ा छोटा कौन है. क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर सपोज ये सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया then the first option is obvious, right? So let's look at this. So we have to estimate it very carefully. ठीक है, चलो. So I'm going to use this concept of logarithm. So look at this 1 to capital N. ठीक है, 1 to capital N of 1 by x dx. So in one hand I can break this in pieces. 1 to 2 1 by x dx, ठीक है, प्लस 2 to 3 1 by x dx प्लस so on, ये n minus 1 to n 1 by x dx. ओके, यहाँ तक ठीक है. अब इसके आगे, अब 1 से 2 के बीच में कैन यू टेल द एस्टिमेट कि हाँ दिस इज द बिगर वन. सो देखो ये जो क्वांटिटी है दिस वन, सो ये क्वांटिटी में जो सबसे जो बड़ा वैल्यू है, ठीक है, द बिगेस्ट वन इज
ग्रेटर देन आपका वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा आपका 1/2, 1/x के जगह पर x 1 से 2 के बीच में सबसे 1/x का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो हाफ होगा दिस, प्लस यहाँ से यहाँ के बीच में 2 से 3 के बीच में 1/x का जो लिस्ट वैल्यू होगा 1/3, प्लस डॉट 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 लास्ट इन दिस n-1 to n द लिस्ट वैल्यू विल बी 1/N. ठीक है यहाँ तक सिंपल. ओके, नाउ व्हाट इज दिस क्वांटिटी, this is nothing but ये half, so what is this, half 1/3 plus dot 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 plus 1/n, right? And what is this quantity? This quantity is nothing but your log of n. So log of n is greater than equal to this. So log of n is greater than 1/2 plus 1/3 plus dot 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 plus 1/n. Okay, so now let me erase this. And why this is strict? Why this inequality is strict? Why this inequality is strict? For that I like to leave this as an exercise why this inequality is strict, that you should prove, justify yourself. Even though if you are not able to do, let me know. Okay, so this you got it, log n greater than 1/2 plus 1/3 plus dot 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 plus 1/n. Add 1 both side, so 1 plus log n greater than 1/2 plus dot 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 plus 1/n, right? ये तो है, ये तो आपका सम है. Look at this, there is nothing but this series and this series is less than this, so this is less than this, strictly true. So this is done. Less than is less than equal to is true. ठीक है, तो यहाँ तक एस्टिमेट आ गया. क्लियर हो गया ना? सो फर्स्ट सेकेंड सर्कल कितने आसानी से हमने कर दिया इस क्वेश्चन को, राइट? सो यहीं पे स्टक था. सो दिस यूजेस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. आई मीन कुछ है ही नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बेसिक, ओनली बेसिक मैथमेटिक्स. डू यू नो बेसिक स्टफ्स और नॉट? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम लोग करते हैं. ओके, लेट मी रेज दिस. ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. लेट्स लुक एट दिस. Again, series 1/n from 1 to n, and they are asking less than equal to log n or something about that. Just now I have given the estimate. Just now, what is the estimate we got it so far? अभी हमें estimate मिला था. Yeah, so अभी देखो ये 1 से n, right? 1/x dx. इसको हमने तोड़ा था 1 से 2, 1/x dx plus dot 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 ये अपना n-1 से n, ये 1/x dx. ठीक है, चेन रूल यहाँ तक. अब इसमें ये क्वांटिटी 1/x का मैक्सिमम वैल्यू 1 to 2 1, और इसी का इंटीग्रल आ जाएगा 1 से 2 dx. नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में मैक्स वैल्यू 1/2 dx प्लस डॉट 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 यहाँ पर मैक्स वैल्यू n-1 से n, द मैक्स वैल्यू विल बी 1/n-1 dx. ठीक है, it's so simple, right? Now look at this estimate. This will be 1, this is 1/2 plus dot 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 1/n-1. And on another hand you have this log n. So log n is less than 1 plus 1/2 plus dot 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 1/n-1, and this quantity is less than 1 plus 1/2 plus dot 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 plus 1/n. ठीक है, so log of n is less than sum 1/n, n from 1 to capital N. So according to that, log n is less than this particular sum. करेक्ट है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता. log n तो इससे छोटा है. So this, so first, second and fourth, third option is false. Okay, equality may not, this is strict. So first, second and fourth, right? So basic, I mean बहुत तरीके हैं. I was confused कि मैं कितने तरीके से जाऊँ. I have at least 7 solutions for this. I can solve the same problem in 7 ways. I mean, I thought this is the easiest one, right? There are many ways to do this, but this is the easiest one you can approach this problem. See, I am here dealing because I have to say you, I have to convince you, I have to teach you. That's why it's taking
sometime few minutes, but in exam hall if you know the things very carefully, it will not take more than I think 30 seconds to approach this problem. If it is going more than 30 seconds, that means you are on the wrong track, your approach is not correct. ठीक है, बना तो लोगे आप, बट आप दूसरे हैंड में हो. लुक एट दिस, it uses very basic logarithm. Do you know logarithm or not? What is the definition of logarithm? And that's what I have used to solve this question. Okay, so there are, I mean, in this question someone told कि इस बार का CSR नेट का क्वेश्चन बहुत ही टफ था ही नहीं इस बार, ना ही गेट का ना ही नेट का, सब I mean बेसिक क्वेश्चन दे आस्किंग. वो बेसिक आ गया, आपका बेसिक ही हिला डुला है तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप. ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम. ठीक है, और ये लाइव क्लासरूम होगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम पे अपना नाम लिख के कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो तो डेफिनेटली हम लोग आपको जहाँ तक हो पाएगा विल सपोर्ट यू. ओके, एंड दिस द वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून. ओके, बाय, टेक केयर.